Okay. I think I'm audible to everybody. So this is an update video on the 12th of August 2022. My last video was on 12th June. Okay, 12th June 2022. So in that video, I explained that the price action, what I was able to see in the price action, I was thinking that there is a correction left for approximately 1 month. Okay, but I was wrong in that. It was approximately more than 1 month. Okay, it has gone to 1 month plus half a month. Okay, so we have seen a movement on 12th of we have seen a movement after 12th of July, I think. So I'm also going to see it right now. So I'm recording this at that instant only. So I think, okay, this is the US dollar index. I have actually predicted, or we should say, I've estimated that the price action should go from here. Let's trade the brush here. So what I've actually thought that the price action should go uh, much more down from this price, but I was also expecting that the correction could also go approximately, sorry, I don't see this, approximately 1 month, okay, month. It's really wide handwriting. Even I could see what I have written, but you can understand I was expecting a 1 month more correction because approximately you can see in a general sense that the daily time frame corrections goes for about 6 months. So I was expecting a because I was able to see the confirmation of the 5 months correction to be completed, so I was expecting a 1 month more than that. And generally, also the markets doesn't actually go in a straight line, so there was the time taken for completion of this correction was way more than my expectation, but it was approximately at that price action. So uh, now we are able to see the US dollar is coming down. Okay, and now this is going to work as a catalyst. I think so. Now let's check. I think we should check the what is this? India Nifty 50 USD. Oh, sorry, Nifty. Okay, this is Nifty 50, and that's the one of the benchmark index of India. And I at this price action, I think at this price action, this was approximately in the month of June. I expected that this correction could go way further for about 1 month. It was my intuition, and there was also an intuition that it could get more than 1 month because everything is not just on the straight line. Okay, everything works in estimates. Okay, estimate is the most important thing. Is the most important thing. I don't have any space now. Um, okay. Estimate is the most important thing in the markets. Okay. So what I estimated that it could go a little bit more, and it has gone more. Okay. And after that, it has completed its 6 month correction. I think. Let's check. It is from here to here. Yeah. Okay. It has completed it right here. Okay. 180 days, which means approximately 6 months. And here it has confirmed its correction to be completed at this point because it has started to touch the 20 EMA and then it started to go up. And as you see, it is going up right now. Okay. So now what to do? If you have uh, seen these levels,
way before, then congratulations. And if it doesn't, then don't worry. Okay, you will get time after it will start this type of correction. Okay, this type of correction that it has taken, it was 6 months correction, and I think you will get the next chance uh, after after approximately 6 months, because the behavior of the price action till this time I could analyze, because my the bank of the chart that I have in my mind, okay, is saying me that it could go for 6 months now straight. No major correction like this, okay? No major corrections like this. It would go like this, okay? Like it has gone in the COVID time. It will go straight. And the targets for this price action, if we estimate the targets, okay, I have to clear this all. Let's see, clear, remove. Okay. So if we want to estimate the targets, what could be the possible targets? On the index level, I could say, okay, it has gone from here to here. It was approximately 2 times, I think. Can anybody tell me? I think it was 2 times. Let's see. It was, okay, it was 2 times. So we can expect it to approximately go to, for 6 month correction, we could get 30% in stock. So I think it will get going to from this price, which is 16,000, I think, 16,500 approximately. So 16,500, 500. Okay. Let's on the index level. I'm not sure about the target, but my intuition right now is saying that it will go approximately 25% point multiplication 0.25 plus 11. No, not 25% कुछ कम तो हो गया. Let's 116,500. नहीं ठीक है. Okay. English only. So it is 20,625. So what is this price? Let's check where it was. 20,000 something. So it will 25%. Wait. My maths is not good. Oh, just a minute. Then my approximation was correct. It will go. Just wait. I'm going to just see my observations, which I have noted down in my keep notes. Just a second. I'm sorry. Because after a long time I'm seeing the chart, so this happens. Regular revisions are really important. So what I observed, for a 6 month correction, there could be a price action movement for approximately 50% or 70%, or even it could go for 80%. So let's see. So we are at here. It is approximately 16,500, let's say. So 16,500. We will go with the minimum approximations. Okay. So minimum approximation will be 16,500 divided by 2 plus 16,500 equals to 24,700. Now this is clear. This is good. Okay. So we are expecting the price action to go to approximately at least 24,000. This price. Oh, sorry. Why this trend line is coming up? Okay. 24,000 something. I'm going to estimate this. So this price will be hit, okay, in the upcoming 6 months, within the upcoming 6 months, okay. It could also take lesser time, but if we estimate at the minimum,
maximum time it could take is 6 months to reach this 24,000 level. Okay. Now let's see the dollar version of this. Okay. We have many of the people doesn't know that the Nifty 50 has its own dollar version, which is called as uh, Nifty 50 USD, which is being traded in India, sorry, in the American markets. So this is a daily time frame chart, and it also looks very similar. Uh, Sorry for the interruption that there are no candles seen here because you can better observe it in the line charts. Okay, you can't use the candles here because the closing price is only been given there. So this is line chart. This looks very more similar to the price action in the US Nifty 50, which was in the rupee terms, and this is in the USD terms. Okay, you can see my cursor; it is on the USD terms, and because the US dollar is right now the most important foreign exchange currency. Okay, everything and every single commodity price has been compared with the US dollar. Okay, so if we go with the US dollar, it is the most important thing to see. Now, and there is an interesting thing. If we go to the monthly charts of the US dollar, we have this candlestick pattern being there. And you can see a really interesting thing that this price, which was in 2007, November, 1st of November, okay, November month, okay, 2007, November month, the markets crashed, which was the crash of 28, which was in America called as the Lehman Brothers crisis. And from that date, the price has never cut this price, okay, cut this price level. So it has passed many years trading below this line. And now it has just, in 2017, it has tried to cut, but then waited for that. And then we had the COVID crisis, and then that movement which was expected to come in the upcoming time was being delayed due to the COVID-19. And now we are able to see that there was a V-shaped recovery because we had already done a lot of time-wise correction. So that's why we have seen the V-shaped recovery during the COVID-19 crisis. Okay, as of now, you can now see that the price action is trading above the 2007, you can say 2007 or 2008 price levels. Now here, it was 5,600 USD. Now it is at the 7,600 USD. It is the Nifty 50 in the US dollar terms. Okay, it is not in the Indian rupees. So it means that the India is going to grow right now. The mutual funds are going to give a lot of returns because when India has uh, cracked all its levels which were there in the crisis of in the starting of the 1992 crash caused by the Harshit Mehta. It wasn't the crash caused by the Harshit Mehta. It was the cycle of the economy. Okay, there was some manipulations, but the overall price was and the trend was in the upside. But there was a temporary crash because of government interventions in the market. So we will be going to study it on some other day. Okay. For this time, we can actually understand this that we had a great amount of corrections from approximately 1994 to 2003, and there we started to actually climb up in the US dollar terms. And on 2003, the Nifty was at 760 US dollars, and then it goes up to 40, approximately 5,400, 5,500, okay, 5,500 USDs.
Now let's calculate what's the percentage. Let's take it from the measurement tool. It was 623% return. Okay. So when the corrections of 10 years, approximately 10 years, okay, 8 years, sorry, in this case, it was 8 years. From 8 years to, in my observation, I could also see, if the corrections are approximately 8 to 12 years, the returns can go up to a minimum return is maybe expected of 8 times, or even it could go in some stocks, which is 12 times. Okay, it is a minimum requirement for a 10-year correction, or 8-year or a 12-year correction to do this. And even it could go 40 times. In some of the stocks, I have some examples that it has gone to approximately 40 times from the initial price level where the 10-year correction has been completed. And this applies to a much higher time frames. Okay, I can show you that in the gold, that in the much higher time frames, which is approximately 35 years. Okay, 35 years. It's a really great time. After 35 years, it could go approximately 100 to 200 times. Okay, it sounds really something out of the box, but it isn't the out of the box thing. It is the most simple observation of the price. And simple observation of the price could tell much more than a historian, than an economist, or even the politicians. Simple price action will tell you every single thing, right? Now, so I was talking about the gold. Now see, I will show you this right now. So the gold had started its decline in 1980. Okay, so from 1980 has on the 1990, 1999, 2000. So approximately it is 20 years of correction. Now, in our calculation, we have taken 8 years to 12 years of correction, could get 8 times at the minimum. So let's see how much the gold has given the return after 20 years of correction. Okay, so gold has given 636% return, which is really underestimated. It was really underperformed itself. Okay, and it generally happens to commodities doesn't actually go like stocks, and so, or in the indexes of any country. So we have seen that the gold has underperformed itself. Now what we can get the conclusion from this? Okay, the conclusion is that if the gold is being underperforming itself in the higher time frames, it is much likely that the gold is going to also underperform in the smaller time frames also. Am I right or not? It is my intuition. Let's check. So let's get to the daily chart of gold, and let's compare this with. I think we should take US dollar. That will be more. US dollar. US dollar. Sorry, Dow Jones. Yeah. So here we have the Dow Jones. It is also underperformed. It's just not a good example. Let's go to Bovespa. Okay, so why have selected Bovespa? I have not selected US dollar because US is also underperforming itself because it's changing its time frame. Oh, sorry, I'm explaining the very wrong thing. I'm sorry. Please, what I said just 1 minute ago, forget that thing. Okay, that is total nonsense. Okay, I was explaining a nonsense to you, and it wasn't going to apply on the markets. You will be get into a really big trouble if you just go with that statement. So let's get back to US. I think this was gold, huh? Okay, this is US dollar, US gold. Sorry. It is the gold chart. Okay, in the US dollar terms, we have seen the monthly time frame. It has given approximately 600
return. Now we are actually going to see. Uh, now we are actually going to see. ठीक है अम्मा? That यार मैं कहाँ था यार, कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं क्या समझा रहा था, रुको मैं अपने नोट्स देखूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, कमोडिटी, जापान, इंडिया, यूएस, फॉरगेट अबाउट गोल्ड। ओके, मैंने actually I have not prepared myself for US dollar, sorry, the gold, so I will not discuss it right now. I will discuss in the further any other video which I am going to make. So I was discussing India. So this was the US, India in US Nifty 15 US dollar terms. Now you have Nifty 15 rupee terms. Now see the difference on the monthly time frame. If you are only seeing the uh, rupee terms, it has crossed its 2007 or 8 tops way back in 2013, but it hasn't because I think it was in 2008 the US dollar was equal to 60, I think 60 rupees. Okay, I don't know actually what was that. So it was approximately at 60 rupees. Now we are seeing the one US dollar is equals to approximately 75 rupees. So that's why you are seeing this movement because of the the weakness of the rupee with respect to US dollar. Okay. Now I think this is clear. Okay, the actual meaning was that we have calculated targets for the upcoming time in Nifty 50, which is we have calculated it, which is 24,000 level in the upcoming 6 months. Okay, which means we are sitting at August, um, August. Then we have to go with September, October, November, December, January, February. So in the next year's February, 2023 Feb, we could see this level. Okay, we can feel it. According to my intuition and all that experience that I have till now. Okay, maybe I will be wrong in the upcoming time, but in the time frame, correct, in the time, because everything is not just goes in the straight line in the market. So let's see. It's my intuition that it will take 6 months. So approximately in 2023 February, I will be able to see this. Okay, it will take about 180 days from here. So 180 days. Ah, and the February, or it may go to, let's say, because I am calculating the months according to 30 days cycle. So the actual time doesn't. That's why my predictions goes wrong, because I used to take 30 days for 1 month. I don't consider 31 or 28 in the time frame. So you can expect that it will be completed in this movement will be completed in the February of 2023, or maybe March, the starting of the March. Starting of the March is the maximum, which I could say. Okay. Now, I was really interested in Japan. Now, what's the reason why I was really interested in Japan? You can see the Japanese market. It has done a really nice correction during the 6 months, and it has also completed its correction of 6 months. And now we are able to see it has been rising now, as all the averages has just come to a place, and now we are seeing the process being executed now. Now, what's special in Japan? Okay, I don't have the Japan's charts before 1984, but with this you can also get an idea of what I'm trying to explain. Okay, so see this from here. This is 19
89. Okay, 1989, the Japanese stock market has got into a really long-term time frame correction, very long correction. So it has taken its correction from 1989 to 1919, which is 10 years right now, and now it will go to 2009. It will be 20 years, and after that, in 2019, actually it has completed its 30 years of correction. 30 years. Somebody could imagine 30 years of correction. I was talking about this actually when I was confusing the goal. I was actually talking about this. The index is actually has completed a 30 years of correction. So 30 years of correction means a lot. Okay, and if you compare in this time frame, the US dollar, sorry, the Dow Jones. Let's go to monthly time frame. Okay, this is sorry, this is not US dollar, Dow Jones. Here's the Dow Jones. In 19, we were calculating it from 1981. Okay, 1981 we got it. 1980, 89. Sorry, 1989. The US in that time frame has got up, and up, and way more up than the Japan. Japan was going down and US was going up. Okay, you can see it very, very clearly. Even a 5-year-old kid can say that US has gone up and the Japan has gone down. And this was actually when we compared it with older time frame, Japan was in the up direction and the US was just in the sideways correction. During the time of war, when there was World War I and World War II, and now you are able to see that from here, it has taken 800% 800% return from here. So it was at 25,000 US dollars. It has gone to 26,000, 2,500 US dollars. Okay, 2,500 to 2,600 US dollars. Now this is the power of price action. See, it has actually, if you try to calculate it till this time, then it will be really, really large number. 1989 with this one. It is 1,300 times. 1,300, sorry, it is 1,300% return. And compared with the Japanese, so here is the Japan. It has gone down. But see this, 2019, it has gone only 81% down. 81%, which is really surprising. Okay, this shows the basic nature of the markets. The markets goes down if the markets are in a trend upwards and something is not wrong with the country or with the stock or any, let's say, commodity. If something is not wrong with it, the correction and or the price will not be really large. Okay, the time could be large. Okay, I'm not saying the time will be really short. The time could be really, really large, but the price doesn't actually go really, really low. If you compare it to the return which the Japan has given in the previous time, right before 1985, it will be really, really small to give this amount of return because it has given, I think, according to my intuition, it has given about 100 times return, maybe maybe 100, 200, 4 to 500 percent return. Okay, that's why it has given an 81% correction. And this correction doesn't actually, this correction actually shows that Japan is now rising. And let's compare it with the China. Many of the people are Chinese fan here. Okay, they have some Chinese fans, so let's also cater them. I don't have it right now, so let's go to China. China.
Indices. So we have Hong Kong, we have Hong Kong. Hey, Shanghai, where is Shanghai? Shanghai कहाँ गया? Oh, sorry, उसका the name was Shanghai. Hmm. यही करो spelling of Shanghai. So okay, we have got it. Shanghai Composites. Now see this. China is also looking really good, okay? But the problem with the China is that they are unpredictable. The government is really unpredictable. They are strict. They want to grow themselves, but they don't want to just just want to hit the what we call that. In Hindi, we can say that वो अपनी अकड़ नहीं मिटाना चाहते हैं. उन अकड़ नहीं, हिंदी में भी गलत बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी गलत बोल रहा हूँ. कैसे कहें यार, उसका वर्ड नहीं मिल रहा मुझे. I'm not getting the word which I wanted to actually say for this type of country or these types of persons who are like they don't want to show themselves as weak. Okay, they try to show themselves stronger than other countries, stronger than other persons, and you can actually see that on the charts also. Some time back in the COVID crisis, we got a news that the Chinese have just stopped the future markets and stopped the people from short selling their positions. Now, this was kind of decision I was also really surprised to see what a country can do. Okay, any of the country, according to my knowledge, have never just stopped their what we call that is short selling, so that the markets could not go way more down. And this was horrible. Even the investors have got something there in their mind has got that China is unpredictable. If something happens in the world, if China is not going to uh, hesitate to save its own image. They have saved their image on the charts, but they have made a long-term impression of the investors that China can give a big loss. So the Chinese charts, I can see that they are good. Okay, they are not as good, but they are good. Let's say why I am saying they are good. That this was the correction in 1993. It was same approximately compared to India. It was 1993 to 2004. Okay, it has completed its correction approximately of 10 years. So what was our expectation? We expected that the China would go up approximately 8 times, or 8 times कितना होता है? 8 times परसेंटेज में कितना होगा? 8 times 800 times 800%. Okay, so we were expecting that minimum कम से कम 600 to दे. It should give 600 because in many of these countries we could expect that 600 तो index level पे आ ही जाएगा. Index level पे तो आना चाहिए. Okay, now see what it has given. See this. It has given this much only, 500. It has really underperformed itself. Okay, really underperformed. Gold इससे अच्छा return दे दिया. Gold has also given a return really good than this. Okay, now this underperformance is showing that there is some weakness with them. There is something going wrong with them. They are underperforming just as like us. We have Bank Nifty in India. If you are trading, you can actually feel that thing. That Bank Nifty is really moving just way behind the Nifty. And same thing is happening also in China. Okay, now see this. 2007, 2008,
2017 it has completed 10 years. Now it has completed approximately, what we can say it is 2022 चल रहा है अभी, 10 मान लो, 10 से 12 साल करेक्शन, ओके 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 ना, ओके, तो ये 13 साल हो जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है. इट इज़ गोइंग मोर देन दैट, more than 12 years, okay, 12 years. It's going more than 12 years now. What we can expect from it? We can expect a minimum 800 times return on this. 800 times. मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, 800 times. और आई एम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज, ओके. पहले सोचा था ये वीडियो इंग्लिश में होगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है हिंदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है. ओके, थोड़ा सा ये वीडियो मुझे लगता है लंबा भी हो गया होगा, आधा घंटे का वीडियो हो रहा है. मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा. मैं अपना व्यू बता दे रहा हूँ इस पर. दैट दिस इज गोइंग टू कम, दैट अकॉर्डिंग टू माई इंट्यूशन ये 600 ही जाएगा. 600 से ऊपर इसको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसने पहले कभी इतना रिटर्न दिया नहीं. ऊपर से इसके ऊपर ये प्रॉब्लम है कि ये जो इसने क्या कहते हैं, अव्वल 90 की, अब कह सकते हैं इसको, अव्वल लेवल की बदतमीजी की है इन्वेस्टर्स के साथ, ठीक है. और सबका खून खौला हुआ है इस समय. मतलब मैं देखता हूँ लोगों को, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब जितना पैसा उनका लग गया, ठीक है, अब इससे ऊपर वो पैसा लगाने को तैयार नहीं है. उन्होंने कहा जितना फंस गया, उससे ऊपर पैसा हम लगाएंगे नहीं जापान के ऊपर, चाइना के ऊपर. और उसी टाइम पे जापान एकदम साइलेंट है. जापान आपको कहीं खबर भी नहीं आती हुई जापान की, ठीक है, पता भी नहीं होगा कि देश पता नहीं है कहाँ पे. और यहाँ देखिए पूरा खेल हो रहा है जापान के अंदर. ये देखो कहाँ गया चार्ट, अरे रश, ये देखो पूरा खेल हुआ है यहाँ पे, अच्छे से करेक्ट किया अपने आप को. इसने रिटर्न भी पहले अच्छा खासा दिया है. अब क्या हुआ, यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हो गया, ये ऊपर जाना शुरू किया वापस से. अब जापान से मेरी एक्सपेक्टेशन इसलिए बढ़ गई है, और चाइना से है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है. अब उतनी ज़्यादा मेरी जब से चाइना से मेरी उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसी वजह से नहीं है. एक कोई मेरे जानकार थे, वो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कि जापान को तो कोई जानता ही नहीं है. जापान के बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं. जो लोग न्यूज़ देखते हैं उनको सिर्फ चाइना, इंडिया, ताइवान, नेक्स्ट मैच. अच्छा ताइवान का भी देख लेते हैं, ताइवान का क्या सीन है. ये ताइवान वेटेड एवरेज आई थिंक सो. तो ताइवान जो है अपनी करेक्शन करने जा रहा है, ऐसा मुझे देख के लगता है. एक बार अचानक से मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा. लेट्स सी, 2017 तक लगभग आपके 10 साल हो गए, और यहाँ से फिर इसने मूवमेंट दी, ठीक है. कितना परसेंट का मूवमेंट हुआ है. अच्छा, तो ताइवान इस समय अभी अपनी मूवमेंट कर रहा है. ये कुछ कुछ आप समझ लीजिए ये इंडिया जैसा ही चार्ट है, ठीक है, ये इंडिया के जैसा ही चार्ट है. अब यहाँ से ये मूवमेंट करेगा. अभी ये फिलहाल अपनी करेक्शन कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम की करेक्शन होगी पक्का. ये देखो, और ये अंडर परफॉर्म कर रहा है यार, पीछे पीछे चलने वाला है ये कभी आपके मतलब तेजी से नहीं चढ़ेगा, हमेशा पीछे पीछे चलेगा. ये इंडिया जैसे देश के पीछे पीछे चलता रहेगा ये. अच्छा, इंडिया के कंपैरिजन में आप देखोगे तो मैं रुको ढूंढ रहा हूँ, ये तो यूक्रेन हो गया. एक सेकंड, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था उसका चार्ट, ताइवान का सेम वैसा ही चार्ट आई थिंक मैंने एक जगह और देखा है, बोविस्पा. इसके इससे काफ़ी सिमिलर चार्ट है ये. तो यहाँ बोविस्पा में आप देख पा रहे हैं प्राइस ऐसे नीचे आया, फिर थोड़ा सा इसने ऊपर जाने की कोशिश की, इन्वेस्टरों को यहाँ पे फंसाया, और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा आया, यहाँ पे इन्वेस्टर्स कुछ लिए होंगे माल, फिर यहाँ पे वो लोग फिर फंस गए, फिर ये और नीचे. अब इसने इतना माल यहाँ पे अब्जॉर्व कर लिया है, तो अब यहाँ से इसको ऊपर जाना बनता है. अब मतलब इसका रुकने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसने सबका माल एब्जॉर्व कर लिया, तो यहाँ पे अभी चलना शुरू कर दिया ऊपर. ये होती है साइकोलॉजी, ठीक है, इसको कहते हैं साइकोलॉजी. वैसे मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था, फिर से मैं आउट ऑफ द पॉइंट चला गया अपने. मुझे कमोडिटी एक्सप्लेन करनी थी, जापान करना था, इंडिया करना था, यूएस करना था. अच्छा, यूएस तब बचा हुआ है. जापान का हम लोग कंपैरिजन कर चुके हैं, ठीक है. जापान में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लग गई होंगी.
बहुत सारे इंसाइट्स मैंने समझा दिए, जितना मुझे समझ में आ रहा है चार्ट देख के वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे, अब जापान का ऊपर आने का मतलब है कि ये जो रुतबा है ना अमेरिका के पास नंबर 1 का, ये छिनने वाला है, उससे छिनने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका पूरा बर्बाद हो जाएगा। जैसे आपने देखा एक समय पे जापान बहुत ज्यादा टॉप पे था, लेकिन उसकी करेक्शन कितनी हुई, बहुत ही कम करेक्शन हुई यार, 81% ही करेक्ट किया उसने। उससे पहले उसने कई गुना में रिटर्न दिया हुआ है। तो 81% तो बहुत छोटी करेक्शन आप मान सकते हैं उस कंपैरिजन में। और डाउ जोन्स में भी आपको हो सकता है आने वाले टाइम में इसी टाइप की करेक्शन दिखे, है ना। ये देखिए, क्योंकि अब हमारा तो सबसे पहला टारगेट तो ये 200 की एवरेज होगी मंथली पे, सबसे पहला टारगेट। तो ये है हमारे पास 20, कितना है अभी फिलहाल 200 जो है 20,000 यूएसडी पे चल रही है, 20,300 यूएसडी पे, ठीक है। तो 20,300 यूएसडी तक ये नीचे आएगा, यानी कि ये जो कोविड के लेवल में ये नीचे आया था ना, ये इसने अपना वो एक तो ये प्रेशर में आ गया, ऊपर से इसने अपना डेमो दिखा दिया, ये डेमो दिखा दिया। अगर इसको मान लो तो यहाँ पे भी आ सकती है, ये तो पक्का आना है इसको, यहाँ पे पक्का आना है, क्योंकि इसने देखो यहाँ से मतलब चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। और अब जापान जब मूवमेंट आगे की करने जा रहा है तो पक्का ये ऐसा जो होगा जापान की तरफ शिफ्ट होगा, अमेरिका से निकलेगा जापान की तरफ जाएगा। जापान फिर से कहीं ना कहीं आपको दिखेगा आने वाले टाइम में नंबर 1 की पोजीशन पे बैठ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल वो रुतबा अमेरिका के पास है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, वो तब भी नंबर 1 रहेंगी चाहे अमेरिका खत्म ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। ऐसा ऐसा उनका कुछ सीन है, जैसे कि गूगल, फेसबुक, ये सब खत्म नहीं होने वाली। ये मत सोचना कि मतलब इंडिया ही चलेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अमेरिका के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बकवास है, सब बकवास है, ठीक है। जो टीवी पे लोग चिल्लाते रहते हैं ना, इंडिया ऐसा हो जाएगा, अमेरिका बर्बाद कर देंगे, और अमेरिका में कोई ग्रोथ नहीं होगी। अरे भैया, ग्रोथ उस टर्म्स में नहीं होगी, लेकिन ग्रोथ हुई है पहले के टाइम में, इसलिए आपको दिखेगा कि आने वाले टाइम में अमेरिका में, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, डाउ सॉरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मेरा एक एस्टिमेट है कि ये टाइम वाइज करेक्शन करेगा, प्राइस ज़्यादा नहीं टूटेगा, प्राइस इसका रेंज में ही रहेगा। एक सेकंड, ये ब्रश का हटाओ यार, बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। रिमूव ऑल, एरो क्रॉस, अब सही है। ये ना टाइम वाइज करेक्शन करेगा, जैसे इसने यहाँ पे की थी ना 1999 में, जब डॉट कॉम बबल बूम किया था, तो यहाँ से इसने करेक्शन दी, और ये देखो यहाँ से ऐसे ऐसे करके इसने रोक दिया, अपने आप को 200 पे लाई। अब यहाँ से फिर ऊपर आई, अब यहाँ से फिर ये 200 पे आएगी और 200 पे बनी रहेगी, 200 से नीचे नहीं जाएगी। तो आप मान लो जो करेक्शन इसकी होगी, अगर हम लोग फिबोनाची से अगर देखें, फिबोनाची बहुत अच्छा टूल होता है, जिससे आपको एक बहुत अच्छा एस्टिमेट मिल जाता है। ये देखिए, फिबोनाची की रेंज लगभग इसी एरिया में आ रही है, ठीक है। हो सकता है अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि यूएस में ये यहाँ पे कहीं आ सकता है, इस रेंज को पकड़ लो, 20,000 यूएसडी और 18,000 यूएसडी के आसपास ये समय बिताएगा। अब कितना समय बिताएगा, लेट्स सी। मेरा एस्टिमेट कहता है कम से कम इसको 30 साल बिताने चाहिए आप। 30 साल मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, 30 साल। जापान का देखो, कुछ ज्यादा नहीं था इसका, 30 साल इसने बिताए। तो अमेरिका भी तो कुछ मतलब बिताना चाहिए यार, 30 साल तो आराम से बिताना चाहिए। अब जब वही 10-10 साल की करेक्शन हो जाती है यहाँ पे, देखो ये सन 1999 से 2009 तक 10 साल की करेक्शन हंसी खेल में हो गई, तो 30 साल की हंसी खेल में हो जाएगी यार, तब तक हम लोग के तो पोता पोती भी हो जाएंगे, अगर वैसे देखा जाए तो। अगर मेरी एज का कोई है तो वो रिलेट कर सकता है कि हम लोग के तो पोता पोती हो जाएंगे उस टाइम पर, करियर वरियर सब सेट हो चुका होगा, तब ये अमेरिका वापस से चलना शुरू करेगा। तो फिलहाल तब तक तो जापान में इन्वेस्टेड रहना होगा। और भैया अगर जापान नहीं रह सकते तो इंडिया अपने पास है ही बढ़िया, अपने देश से बढ़िया कुछ है ही नहीं, अपने देश में लगे रहो। कहाँ कहाँ गया अपना देश, अरे कहाँ गया इंडिया, ये देखो इंडिया, पावर ऑफ इंडिया कैसे चला जा रहा है, एकदम यूं स्यूं स्यूं करके चल रहा है, बस जैसे राकेश झुंझुनवाला जी कहते हैं ना,
यू मस्ट हैव फेथ इन योर कंट्री, यू मस्ट एक्चुअली हैव फेथ ऑन योर कंट्री। ये लाइन प्रूव होती है चार्ट से भी, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि चाइना बहुत तेजी से बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। जब वर्ल्ड के अंदर पैसा आ रहा है, अमेरिका से पैसा शिफ्ट होगा, तो हर देश बढ़ेगा। आपको मैं आपको एक ऐसे देश का नाम बता रहा हूँ जिसका नाम सुना भी नहीं होगा, इटली, सॉरी फ्रांस का है। अच्छा फ्रांस का भी देख लो, फ्रांस का मंथली टाइम फ्रेम ये देखो, 2000 से ही करेक्ट कर रहा है अपने आप को। इसमें भी कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा। ये यूरोप की कंट्रीज हो गई, अब ये कनाडा हो गया, अमेरिका के ठीक ऊपर जो है ना कनाडा, चार्ट में देखा होगा, हम पंजाबी लोग जानते हैं कनाडा, वहाँ का देखो, इंडिया जैसा एकदम है, सिमिलर चार्ट है, सिमिलर चार्ट। ये मैक्सिको, मैक्सिको का भी लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा इसमें कनेक्शन यहाँ से शुरू, यहाँ पे इसका मतलब कनेक्शन एंड होगी, थोड़ा और इसमें टाइम बचा हुआ है लगभग, मुझे लगता है और थोड़ा 1-2 साल और इसमें टाइम बचा है, ऐसा एग्जैक्टली देख लेते हैं कितना है। सन 2013 इसकी करेक्शन यहाँ से चालू हुई है, यहाँ से लेके ये है सन 2007, 2017, 10 साल, 17, 3, 13 साल हो गए, 13-14 साल होने जा रहे हैं इसे, ठीक है। 13-14 साल भी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। चलो ठीक है, इसको देखेंगे बाद में, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे टैकल करना है। इटली देख लीजिए, इटली का प्रीवियस चार्ट मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको देख के ऐसा लगता है कि इसने यहाँ सन 2000 से ही ये भी करेक्ट कर रहा है अपने आप को, और 2000 से करेक्ट करते 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 यहाँ पे पहुंच चुका, तो इटली भी ग्रो करेगा यूरोप के अंदर। स्पेन देख लो, स्पेन का भी देखिए करेक्शन अच्छी खासी हुई है। अब आपको समझ में आ गया कि मैं क्या देख रहा हूँ आखिर, मुझे ऐसा क्या दिख रहा है। ये देखो, ये कितना हो गया, सन 2000 से लेके 2022-23, ये है पीएसटी यूक्रेन। अच्छा यूक्रेन को भी देख लिया जाए, बड़ा इस पर बम पड़ गए। यूक्रेन को देखो, यूक्रेन भी 2007 से करेक्ट कर रहा है अपने आप को, और अभी उनके यहाँ कुछ थोड़ा पंगे वंगे चल रहे हैं, वॉर हो रही है, तो इनकी ये हालत हो गई है। 2019 तक इनके अच्छी खासी करेक्शन हो गई। अब यहाँ से यूक्रेन ऊपर जा सकता है, एक बार अगर खत्म हो गई आने वाले टाइम में, तो ये और ऊपर जाएगा। इसकी टारगेट आप अपने हिसाब से लगा लो, मान लो 500, ये आई थिंक यूएसडी में होगा, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। 500 जो भी करेंसी है इनकी, 500 से लेके 8 टाइम्स का हमने कहा था, तो 40 तक तो ये जाएगा मिनिमम, यहाँ पे 40 और कम कर लेते हैं, पता नहीं बचेगा भी कि नहीं वॉर में, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो 500 पे है, तो 40 तो हम लोग 40-100 तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 4000 जो भी इनकी करेंसी है, वहाँ तक ये जा सकता है। एमएक्स, मैक्सिको, मैक्सिको टैकोस, अच्छा ये तो चिली है, चिली 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 चिली, मिर्ची लग गई, मिर्ची लगी भाई साहब, पता नहीं कैसा चार्ट है इसका। यहाँ से लेके इसने करेक्ट किया अपने आप को, ये 2010 की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, हम लोग बच्चे थे उस समय। अब 2010 से लेके 2020 आ गया, 10 साल हो गए, और थोड़ा तो इसका भी चार्ट अच्छा है, आने वाले टाइम में ये भी अच्छा रिटर्न देगा। यहाँ पे जो भी है उसके हिसाब से आप टारगेट लगा लो अपना। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने इसको ज़्यादा देखा नहीं है, बाद में देखेंगे इसे। कनाडा का थोड़ा सा चार्ट अच्छा था, तो देख के मैंने समझा दिया आपको। फ्रांस, फ्रांस देखो, डसॉल्ट एविएशन, रफाल, सब यहीं से आ रहा है, मतलब फुल कृपा है 2000 से लेके अरे बाप रे, कितना लंबा वीडियो हो गया। चलो 2000 से लेके 1 घंटे का होने जा रहा है, यहाँ तक 2021 लगा लो यार टारगेट। अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने जाना है। मैक्सिको देख ही लिया, इटली देख लिया, स्पेन देख लिया, यूक्रेन देख लिया, पता नहीं बचेगा कि नहीं, बम बम इतने पड़े हैं। अच्छा ये देखो S&P, ये देखो क्या रिटर्न आया है यहाँ पे। अभी भाई इसमें कुछ तो करेक्शन आएगी ना, सब यूएस के हैं, यूएस 50 हो गए। अभी हांगकांग को देख लो, इनके यहाँ भी बवाल चलता रहता है, चाइना वाले से लड़ाई होती रहती है इनकी, तो इनकी भी अच्छी खासी करेक्शन कंप्लीट हुई है। ये 2007 से लेके 2010 सालों की होती है, टारगेट लगा लो अपने हिसाब से जो तुम्हारी क्षमता है, ठीक है। ये सेंसेक्स है, और सेंसेक्स देखो 2002,
ये बदतमीजी है। 2003 तक का इनके पास है। होना चाहिए यार, ज़्यादा डेटा होना चाहिए। बोविस्पा में ये देखो, यहाँ 1904 से देख लो यहाँ तक, और उससे पहले का रिटर्न देखो कहाँ से कहाँ चला ये 000 यहाँ 1 चालू हुआ, 1 से लेके कुछ हुआ 9000, 1 से 9000, 3000, सॉरी 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 3000, 3000 मान लो, 5 मत मान लो, 3000, 1 रुपए की चीज 3 4 रुपए। ये होता है जादू, जादू इसको कहते हैं। आज यूएस डॉलर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थक गया हूँ मैं। अभी जाऊंगा, आराम करूंगा, फिर मुझे काम करना है अपना। ये 2007 से देख लो, ये यूनाइटेड किंगडम का है। FTS 100, 100 कंपनियां वहाँ की हैं। ये तो पता नहीं क्या है। अच्छा हाँ, शंघाई है, सॉरी सॉरी, इसको डिलीट करो। आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया होगा कि लॉन्ग टर्म में क्या चलेगा, क्या बंद रहेगा। ये जापान, ये जर्मनी, जर्मनी, हिटलर नहीं, अब हिटलर नहीं है वैसे। तो यहाँ से सन 2000 से लेके अब तक लंबी करेक्शन है इसकी। ये आई थिंक मुझे लगता है उनकी करेंसी के हिसाब से है ये, जो भी वहाँ पे शायद जर्मन डैक्स चलता है, डैक्स, हाँ डैक्स होती है वहाँ की करेंसी। तो ये यूएस डॉलर में देखेंगे तो ये कहीं इस एरिया के आसपास जो है तोड़ा होगा यूएस डॉलर के टर्म्स में, अगर आप इसको देखेंगे। बाद में चेक कर लेना, मुझे भी इसका चार्ट नहीं मिला था। ठीक है बस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द वीडियो रिकॉर्डिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा, अपने आप को मैं जिंदा देखना चाहता हूँ, बुरा नहीं देखना चाहता। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे खुल जा भाई, खुल जा, ये सब बंद करो, इसको खोलो। बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगा, ठीक है, बहुत बड़े अक्षर में। जान रहा हूँ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। इट इज नॉट अ, ध्यान से पढ़ लो इसको, ठीक है, बाद में मेरा गला पकड़ने मत आना। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। इसको ना बाद में आगे लगा दो।